Welcome back in my channel. So let's continue. Earlier, we was looking about that the software testing types. So continuing this session to discuss on the software testing type. But before that, I would recommend it to understand what is the benefit of the software testing. So if you do the testing, इसका benefit कहाँ कहाँ मिलेगा आपको और then we can understand that software testing is more important to performing for the application. So first of all, it is a cost effective, one of the best part of the software testing benefit, cost effective. High. Why the cost effective? Because if you are caught a defect in early basis, then we can minimize the cost to fix. And in the IT project is we can save more money. Okay, and in the testing of the any IT project, I tell you one example. If you are verifying the software of any domain like financials domain, banking domains, mobile domain, and research center project. So if we are find a defect before delivery, because post delivery, if the defect is found, that could be a very problem, and it will again have developer to fix the problem and again testing. So under development environment, if we have any issues, if we find out any defect or bug or error or any missing requirement, then we can minimize our costing. That's the reasons testing. This is the benefit of the testing. We can minimize the cost in this manner. Second, security. Security means कि everyone want to a software have a defect free or trust, because we don't want to a any malicious virus come on my software. It could impact our transactions, our history record, our data theft. So every person want to secure of their sensitive data, most important in the banking areas. So people transactional history, uh, their balances information, no should know about that. Otherwise, the hacker can know the detail and they can hack their account, and on that case, people can have a much problem. So security is much more concerned. So testing is a part where we can minimize that type of malicious defect or malicious virus. So looking for trusted removing. So on that case, uh, with help of security testing, it will help to the people to save their data, and they will more trust on that applications, so that we can build up a trust on the application, build up trust on the organization, trust on that tester. So it is very important. This is one of the best part of that applications for security perspective. Third, but not least, product quality. So product quality requirement is very important. Without every the tester, or we can say that quality analyst role in the testing department, it's important to maximize the quality and minimize the defect. This is the motive of the software testing area. So once we find out more defect, more errors or missing requirement on the application, then we can minimize the time first, maximize the quality, minimize the cost, or minimize the time also. Okay, so quality we can provide us with the help of testing on the application. Okay, so a part of that customer satisfaction. So if we provide the quality based application, we can minimize the cost, minimize the time, minimize the effort, then client will much satisfied of this application, because they can release the application to the end user. End user work seamlessly if they don't have any issues. I mean, problem everywhere. Okay, problem is everywhere, but they will have the some problem in respect to the big problem.
मीन्स कि सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं करना चाहिए इन बिटवीन द वर्किंग ऑफ द एप्लीकेशन इन द रियल टाइम. सो रियल टाइम एप्लीकेशन क्रैश न करे इसके लिए रिगोरस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है टेस्टर द्वारा. Multiple testing they are performing: manual, of automation, performance, okay, and volume testing. So there are multiple kind of testing. So that's why I tell you the type of testing is pretty much important to minimize the defect and maximize the quality. Okay, so let's move to the software testing type. Okay, so majorly we can categorize of the software testing into four major part. First, functional testing. Second, non-functional testing. And third, we can say that automation testing also we can consider as a part of automation. And other change related type of testing. I mean, change related type of testing. I will tell you every testing type definition in depth. Um, Before that, I tell you why we add automation. So automation is the one of the um, major part of the testing. So where we can minimize our time and effort, and of course, it will increase our return of investment ROI. So functional testing may we can verify GUI testing. GUI, I mean graphical user interface, and we can say that system testing, system integration testing, smoke testings, or scenario testing. There are multiple type of testing. Even though there are 150 type of testing in the software industry, we can't all are bits and pieces. Okay, but majorly we are performing system testing. Okay, under the functional testing, we need to verify each and every workflow, each and every features of the application, what is defined under the business requirement document. Because business requirement document, we can say BRD is the base document. With the help of that, tester can verify the expected result in compared to actual result. Actual result क्या होता है? Actual result, though, once you are go for the execution of the application, the what the result come out and the real time, this is called actual. Or expected, how to verify the actual result is true or correct, where we can matching. So BRD document provide the certain rule and regulation. Based on that, we can verify what should be come out. Okay, and then we can match what should be come out and what is coming now. So we are matching. If the we can match, if the match the detail match means actual result is matched with the expected result, means the test will be pass. If not match, the test will be fail. So this is a certain rule and regulation of the software testing process. uh, Now, the non-functional testing. Non-functional testing, we can do it like performance testing. Performance testing is still a very big area. Security testing also a very big area. Okay, and we can say the database testing also a big area. So testing is a not a small, it's a very big and biggest area, and multiple skill set are required to verifying of that kind of testing. Suppose performance testing, manual tester will not perform. It will require a big and experienced or skilled people person to verify the performance testing. Performance testing, we can divide it further into the two parts. First, load testing and stress testing. I will tell you more about the performance testing. This is a big area. Similarly, security testing, database testing. Security testing, it would verify the malicious attack on the application, how to save. Okay, how to cure uh, of the security testing to safe. We can deliver a safe product or trusted product to the client. So security testing must be entertained before delivery to the client side. Now, in the security testing, in the non-functional testing, we can also verify the configuration testing, build configuration, and installation testing.
because every software need to be installations. So during installations, the people did not get more problem. Okay, in the development area, the tester will verify that what is the step. The step should be very flawless, without error. And easily user can click, 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 click. You can see now in the software installation, sometime window installation, you need to just click next, next, next. It will install in your local machine perfectly. Even though the icon will be also present into the desktop. So that's why I'm saying installation is very important to verify before move to the end user. And now the other part of testing, like change related type of testing, like we can say that smoke testing, a little bit regression testing, build verification testing, and sanity testing. So all small testing come under the related to the change related type of testing. Suppose if you got the new build from the developer, because this is testing process, testing will start once you get the build from the developer. अब build क्या होता है? Build nothing but a application package. So whatever developed by the developer, this application would very helpful to you to verify for further step of testing. So टेस्टिंग के मेन एक्शन में आने से पहले हम वो वेरीफाई करते हैं कि टेस्टिंग के लिए है भी कि नहीं. जो बिल्ड डेवलपर ने दिया है दैट इज फिजिबिलिटी फॉर फर्दर राउंड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग. So all major type of testing will be performed after the sanity testing or smoke testing. First, smoke testing means like a smoke means it's a very a small set of test cases where we need to verify the particular build or particular package of the developer released. Okay, so that we can move forward for the further level of testing. Suppose build आया हमारे पास और स्मोक टेस्टिंग का कुछ सेट हमारे पास, सपोज लॉग इन चल रहा है नहीं, नेक्स्ट पेज आ रही है नहीं आ रही, कोई बटन काम कर रहा है, क्लिक क्लिक. जस्ट लाइक ए exploratory testing we are doing, click click click, or some major functionality, this 1 to 2 major functionality they will verify under the smoke testing. So smoke testing में अगर पास हो गया, then this build will go for the further round of testing. वहीं फेल हो गया तो देन बिल्ड वापस जाएगी डेवलपर के पास, वो फिर वापस उसको नया बिल्ड बना के दोबारा पोस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टर के इन्वायरमेंट में. ओके, इन्वायरमेंट बहुत तरह का होता है, जैसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्यूए इन्वायरमेंट, यूएटी इन्वायरमेंट, पोस्ट आई मीन प्रोडक्ट इन्वायरमेंट. सो दिस तरह मल्टीपल इन्वायरमेंट हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देखते हैं. अलग अलग कंपनी साइज पे अलग अलग इन्वायरमेंट डिपेंड करता है. कहीं तो एक ही सर्वर पे एक ही इन्वायरमेंट पे और डेवलपमेंट भी होता है, टेस्टिंग भी होता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी साइज. बट आइडियली एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होना है जहाँ डेवलपर वहाँ डेवलप करेंगे और बिल्ड डेवलप करके बिल्ड बना के वहाँ से रिलीज करेंगे अपने पास, अपने एक लेवल टेस्टिंग करने के बाद. तो डेवलपर अपने टेस्टिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग इज कॉल्ड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, मीन्स कि वो कोड लेवल पे वेरीफाई करते हैं, वो ब्रांचेज और लूपिंग्स की वो वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद वो एक सर्टेन लेवल का टेस्टिंग वो कर लेते हैं फंक्शनलिटी की, बट वो एंड ऑफ टेस्टिंग नहीं कर पाते. दैट्स द रीजन टेस्टर कम टू द पिक्चर टू गो फॉर द रिगोरस राउंड ऑफ टेस्टिंग. ओके, सो टेस्टिंग डिपार्टमेंट जाने से पहले वो बिल्ड को एक लेवल पे वेरीफाई करके उसके साथ कुछ नोट अटैच कर देते हैं जिसको बोलते हैं रिलीज नोट, जिसमें वो लिखते हैं कि हमने इस बिल्ड में क्या चेंज करा है, पहले क्या था अब क्या है, जिससे टेस्टर को आसानी होती समझने में. उसके बेस पे वो फिर आगे फर्दर टेस्ट केस राइट करेंगे. ओके, अब टेस्ट केस क्या होता है? टेस्ट केसेस के लिए एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक प्रोसेस है जिसमें हम टेस्ट केस डेवलप करते हैं. मीन्स टेस्ट केस फॉर्मेट बना के उसमें पर्टिकुलर जितने भी टेस्ट केसेस यानी जितने सिनारियोज हैं, यानी कि जितनी फंक्शनलिटी को वेरीफाई करना हम नोट करते हैं वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन. हर फंक्शनलिटी, सपोज लॉग इन फंक्शनलिटी एंड अकाउंट डेबिट फंक्शनलिटी, अकाउंट क्रेडिट फंक्शनलिटी. Okay, transfer to the IFMS, RTGS, multiple functionality we can writing down under the one proper document is called test case design document. इस पे भी आते हैं, आएंगे, इस पे भी हम आएंगे और इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे धीरे धीरे. अभी आप ये समझ लो कि एक टेस्ट केस डेवलप होता है जिसके बेस पे टेस्टर टेस्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को, और उसके बेस पे डिफेक्ट रेज करते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो BRD डॉक्यूमेंट्स के को रिजल्ट से मैच कराते हैं जो एक्चुअल रिजल्ट आ रही है.
अब देखो, स्मोक टेस्टिंग करने के बाद एक सैनिटी टेस्टिंग करेंगे। सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है? सैनिटी में वो एक कुछ सेट ऑफ medium level we can not we can't say high level functionality, but medium level functionality they will verify to just validate or verify that particular application whether working fine or not. Okay, so उसके बाद वो फिर नेक्स्ट लेवल पे चले टेस्टिंग हो जाते हैं। इसके बाद उसमें टेस्टिंग और टाइप हैं, आपको मैं बता दूं। फंक्शनैलिटी वेरीफाई करने के बाद उसको रिग्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं। सपोज एविट है, वो नया बिल्ड मिला उनको, और वो नया बिल्ड मिला तो फिर वो बिल्ड को वेरीफाई करने के दौरान उनको जो न्यू चेंजेस कर रहा है वो नया बिल्ड में आ गया। अब उसमें सपोज करो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी थी जो उस बिल्ड के कारण ब्रेक हो सकती है, जिसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग। समटाइम कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर कुछ बग को फिक्स करते हैं तो उसके इम्पैक्ट में दूसरी जो चल रही होती फीचर्स वो ही ब्रेक हो जाती है। तो हमें सिक्योरिटी के लिए बाकी प्रीवियस बिल्ड में जो भी डेवलपमेंट हुआ तो वो सही वर्किंग है या नहीं है उसको भी वेरीफाई करते हैं। यानी कि प्रीवियस फंक्शनैलिटी नया फंक्शनैलिटी वेरीफाई करेंगे, जो न्यू फंक्शनैलिटी मीन्स जो चेंज रिक्वेस्ट किया गया होगा। समथिंग कि अभी हमने एक मान लो हमारा 100 फंक्शनैलिटी है, उसमें 10 फंक्शनैलिटी फर्स्ट बिल्ड में फर्स्ट फेज में रिलीज किया, उनको वेरीफाई कर लिया, परफेक्ट है। सेकेंड बिल्ड आई तो उस 10 में से जो पिछले में 10 में जो प्रॉब्लम थी उसमें से 8 चल रही, 2 नहीं चली, तो 2 वो दोबारा बिल्ड बनाएंगे, इसमें 2 फिक्स करेंगे। लेकिन जो 2 फिक्स करेंगे उससे वो बाकी 8 जो था पहले से प्रॉब्लम फिक्स, उस पर तो प्रॉब्लम नहीं है। इसी कारण से मान लो 1000 ऑफ फंक्शनैलिटी है, उन्होंने कुछ फंक्शनैलिटी को फिक्स करवाया है, लेकिन बाकी भी फंक्शनैलिटी वर्किंग होनी चाहिए, मेक श्योर। तो टेस्टर मेक श्योर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिफेक्ट के फिक्स होने से उनका इम्पैक्ट बाकी प्रीवियस मॉडल पे भी तो नहीं पड़ रहा है। तो उसमें वो चेक करेंगे, उसको रिग्रेशन सूट चलाना होता है। रिग्रेशन सूट्स में वो सारी सिनेरियो लिखी होती है, सारी मेजर सिनेरियो होते हैं जिसमें वो इंटरकनेक्टेड सिनेरियो होते हैं। इंटरकनेक्टेड सिनेरियो को वेरीफाई करते हैं जो सूट में, उन्हें हम रिग्रेशन सूट बोलते हैं। और मेजरली रिग्रेशन सूट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन यहाँ कम टू द पिक्चर। ऑटोमेशन बेसिकली come to the picture of the multiple iterative type of nature of test cases need to be performed. So manual testers हर जगह वो टेस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें काफ़ी रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी उस केस में। सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक सिंगल एप्लीकेशंस जो कॉम्पैटिबिलिटी है आई में मीन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर में, मोजिला में, क्रोम में, और मोबाइल पे भी एंड्रॉयड मल्टीपल वर्जन, मैक मल्टीपल वर्जन। तो एक ही एप्लीकेशन को हर प्लेटफॉर्म पे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं, उस पर एग्जीक्यूट करनी होती है। क्योंकि हमें एक एप्लीकेशन तो एंड्रॉयड में भी सेम एप्लीकेशन अवेलेबल होती है, सेम एप्लीकेशन iOS में भी होती है, सेम एप्लीकेशन एप्पल वॉच में भी होगा, सेम एप्लीकेशन आपको वेब के मल्टीपल वर्जन, मल्टीपल इन्वायरमेंट, मल्टीपल ब्राउजर में अवेलेबल होगा। तो उस केस में हर वही सेम टेस्ट के लिए मैनुअल टेस्टर क्या करेंगे, 5 मैनुअल टेस्टर लगेंगे हर इन्वायरमेंट के लिए। then we cannot save more time, that could be a more cost impact। so यहाँ कॉस्ट सेव नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट सेविंग और टाइम मिनिमाइज करने के लिए ही ऑटोमेशन टेस्टिंग पिक्चर में आया। और ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम स्क्रिप्ट लिख के हम हर इन्वायरमेंट को एग्जीक्यूट करें, एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल इन्वायरमेंट में, यानी मल्टीपल ब्राउजर, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन के बारे में गाइज मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में। दैट इज ए मेन एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द टेस्टिंग। सो अभी मैं साइन ऑफ करता हूँ। तो मैं शैलेश कुमार आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड डे।